So the question says a graph is shown in the below figure. This symbol signifies that the straight line does not touch the point, and this symbol signifies that the line touches the point. Now we have to choose the correct option, and we have to see from the graph whether it is invertible or not, whether it passes the vertical line test or the horizontal line test, and whether it's the even function or the odd function. Now, before doing this question, let's first understand all the topics which were mentioned in the option. Now, the first thing, what is vertical line test? So, vertical line test is done to understand whether the function or whether the graph is a function or not. So, a graph represents a function if there is no vertical line that intersect the graph at more than one point. So, basically, यार ये आप लोगों को पता होगा that we have domain and we have a codomain. Okay, so for example, in domain I have ABC number and in codomain I have 1 2 3 number. So domain cannot have two values. Okay, so basically you can understand that this is son and this is mom. So basically one son cannot have two moms, though one mom can have two sons. Okay, so like this condition is possible, but the sons cannot have many mom. Therefore, one x cannot have many y. So this is not possible. But one y can have many x. So this is the concept of saying whether a graph is a function or not. तो यार vertical line test जब हम कर रहे हैं, so basically अपन एक vertical line बना रहे हैं. So basically अपन x axis को constant बना रहे हैं. अब अगर अपना ग्राफ वर्टिकल लाइन को दो पोजीशन पे कट कर रहा है, दैट मीन्स कि एक x की वैल्यू के लिए वी हैव मोर देन वन वैल्यू ऑफ y, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन. देयरफॉर अगर एक पॉइंट से ज्यादा वर्टिकल लाइन ग्राफ को कट करती है तो अपना ग्राफ फंक्शन नहीं कहलाएगा. सो इज अ फंक्शन व्हेन नो वर्टिकल लाइन क्रॉसेस द ग्राफ मोर देन वंस, एंड फंक्शन नहीं कहलाएगा जब इट क्रॉसेस मोर देन वंस. तो यहाँ जब अपन एक वर्टिकल लाइन खींची तो यार इट इज कटिंग द ग्राफ एट 3 पॉइंट. देयरफॉर आई हैव x की एक वैल्यू के लिए आई हैव 3y की वैल्यू, विच इज नॉट पॉसिबल. बट यहाँ पे आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, द लाइन एंड द ग्राफ आर कटिंग और इंटरसेक्टिंग ओनली एट वन पॉइंट. देयरफॉर दिस कैन बी टर्म्ड एज अ फंक्शन. नाउ द फर्स्ट थिंग, सो बेसिकली दिमाग में क्या रखो दैट वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर पास हो रहा है सो दैट ग्राफ इज अ फंक्शन. नाउ सेकंड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. अभी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है, वर्टिकल को भूल जाओ बिल्कुल भी, फंक्शन है हमारा ग्राफ या नहीं डजंट मैटर. बट अगर कोई ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन को पास करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ तो यहाँ ये फेल हो गया. क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है. देयरफॉर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर पास होता है तो मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि वट एवर ग्राफ आई हैव उसका जो इनवर्स होगा ना दैट विल बी अ फंक्शन. दिस इज वॉट आई कैन कंक्लूड इफ एनी ग्राफ इज पासिंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स कट करो, सो यू विल नोटिस कि यार एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे अपना ग्राफ कट होगा. देयरफॉर दिस passes the horizontal line. Therefore इस ग्राफ का जो इनवर्स होगा that will be a function. That means it will follow the vertical line test. इसका इनवर्स. ठीक है. Now this is about the vertical line test and the horizontal line test. Vertical test is for finding out whether a graph is a function or not. Horizontal line test is to identify whether the inverse is a function or not. Now what if अगर मेरा एक ग्राफ है जो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल को भी कर रहा है, तो यार वर्टिकल कर रहा है तो मतलब वो फंक्शन है, और हॉरिजॉन्टल को भी कर रहा है तो यार उसका फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है. इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब कि फंक्शन इज इनवर्टेबल. और इनवर्टेबल कब को होता है? जब वो 1 to 1 होता है, मतलब कि एक एक्स के लिए सिर्फ एक वाई हो, जो कि ऑब्वियस है. आप कोई सा भी ग्राफ लो, अगर उसको वर्टिकली आप लाइन बना रहे हो फिर भी वो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है, मतलब कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने में भी एक ही पॉइंट कट हो रहा है,
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने में भी एक ही पॉइंट कट हो रहा है. दैट मीन्स फॉर वन वैल्यू ऑफ x आई हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ y एंड दैट इज नोन एज वन टू वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. Therefore, I'm concluding the theory which we have learned right now. So, अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट पास होता है तो अपन फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास होता है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा कि नहीं होगा अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं. एंड इफ अ ग्राफ इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दोनों को ही पास कर देता है, सो इट इज वन टू वन फंक्शन, देयरफॉर इनवर्टेबल होगा वो. डन. ओके. Now let's move forward to the even and odd function. So even functions क्या कहलाते हैं? अगर आप x की negative value भी रख दो, still it will be fx. So any function which satisfies this equation will be termed as a even function. But अगर आप x के जगह negative रख रहे हो तो आपकी y या फिर function की value में भी negative आ जाएगा. So that kind of functions are known as the odd functions. So the important point to remember is कि जो even function होते हैं, they are symmetrical about the y-axis. Why? Because x negative और x positive में जो अपनी function की value आने वाली है, that will be same. So even function are unchanged about the y-axis. Now you have all the knowledge which is required to do question number 1. So let's read the option and do it. Now, यार अब पहले ना vertical line और horizontal line में mark कर लेती हूँ. So for example, here I am making a vertical lines. If I notice there is only one point on a graph which is cutting my vertical point, therefore vertical line test तो pass कर गया. तो ये जो ग्राफ है this is a function. ठीक है ना. अब horizontal कर लेते हैं. तो अगर देखो मैं यहाँ horizontal खींच रही हूँ या यहाँ horizontal खींच रही हूँ, so you will notice that I have infinite value of x for which I have only one value of y. Therefore, it is not, horizontal line test is not true in this case. Therefore, ये जो function है invertible नहीं है, one to one नहीं है. Done. This is what we have concluded. One to one is नहीं है. This is not there. So the given graph is not invertible. This is true. The graph cannot be a function क्योंकि ये vertical line test को fail कर रहा है. ये vertical line test ये पास कर रहा है और ये फंक्शन भी है. तो यार ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल गलत है. ग्राफ कैन नॉट बी अ फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि अपना ग्राफ एक फंक्शन है. एंड वैसे भी ये हॉरिजॉन्टल को पास नहीं कर रहा है और वर्टिकल वाले को पास कर रहा है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट उल्टा लिखा गया है बी और सी में. नाउ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स दी ओके, सो इट इज नाइदर अ इवन फंक्शन नॉर अ ऑड फंक्शन. तो यार इसको या तो फिर आप ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई कर लो. देखो y एक्सिस के में ये सिमेट्रिक नहीं है. अगर y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता तो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ होता. समझ रहे हो? बट ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट इवन, नाइदर दिस इज ऑड. हाउ आई आइडेंटिफाइड? fx मान लो, तो x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने मान ली 1. तो आप मुझे बताओ f of 1 कितना आ रहा है. सो f of 1 इज कमिंग आउट टू बी 0. And f of minus 1 कितना आ रहा है? f of minus 1 is coming out to be minus 2. So neither my f of minus x is equals to fx, nor it is equal to minus of fx. ठीक है ना? So therefore this is neither even nor odd. Therefore my D option is correct and E is just the opposite of it. So this is wrong. So question number 2 says for y is equals to x raised to the power n, where n is a positive integer, which of the following statements are true? Now before doing this question, let's first cover the theory. So any function of kind y is equals to x raised to the power n, those are known as the power functions. And please keep this in mind that if our n is even, then the graph will resemble the graph of x square. That means it will be quadratic, it will be parabolic type. And if our n is odd, then it will resemble a graph of x cube. Therefore, in any of the cases, n की कोई सी भी value क्यों ना हो, odd, even, anything, since it's an integer, so the only possibility is odd and even, हमारा ग्राफ हमेशा फंक्शन होगा क्योंकि यार quadratic और cubic एक फंक्शन है और उसी के ही तरह बाकी के होंगे, right? Okay. So now let's do the question.
So for all values of n, y is not one-to-one function. A one-to-one function check करने के लिए we need to check whether our graph is passing the vertical line test and horizontal line test or not. तो यार मेरे पास दो ही टाइप के ग्राफ आने वाले हैं for this. One is a quadratic type and one is a cubic type, right? So this is the two type of graphs which I will be having. तो यार वर्टिकल तो ये दोनों ही पास करेंगे. वाई? बिकॉज वर्टिकल लाइन टेस्ट अपन को ये बताता है कि वेदर ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट. और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये फंक्शन होगा ही, और आप चेक भी कर सकते हो. वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, अपन के ग्राफ को ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करने वाला है, ठीक है. सो इट विल बी ऑलवेज अ फंक्शन. नाउ मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है. यहाँ हॉरिजॉन्टली करो तो यार ये फेल हो गया. Therefore, not for all values of n, y will be always a one-to-one function. So this comes true क्योंकि यहाँ नॉट लिखा हुआ है. एंड अगर आप नोटिस करोगे तो क्यूबिक में तो देखो यार हॉरिजॉन्टल भी पास हो गया. तो जब भी n की वैल्यू ऑड होगी ये 1-to-1 होगा. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दोनों को पास कर गया. बट जब भी मेरी n की वैल्यू इवन होगी ये 1-to-1 नहीं होगा. फंक्शन तो होगा बट 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है. So for all values of n, y is injective function. So this is just an opposite of option A. Therefore, this is wrong. Injective function or one-to-one function means the same. एक ही चीज के दो नाम है. Y is not a function. This is absolutely wrong. For any value of n, y will be a function. जब n की value even है तो y जो होगा वो injective नहीं होगा. So this is true. जब n की value odd है, so this is true. I'm sorry, क्रॉस क्यों कर दिया. जब y की वैल्यू मेरी ऑड है तो मेरा जो फंक्शन होगा वो इंजेक्टिव या 1-to-1 फंक्शन होगा, ये भी ट्रू है. In this question we have been given an equation and asked to find the value of this expression. So it is given as 16m upon 2n plus 27 raised to the power n upon 9, 6 raised to the power m. Now in such questions we need to be very active to understand that I need to use this equation. How I can use it? By simplifying 16, 27 and 9 into 2's and 3's. Let's do it. So 16 can be written as 2 raised to the power 4. And 27 can be written as 3 raised to the power 3. And 9 can be written as 3 raised to the power 2. Powers get multiplied. Now since we have the same base in numerator and denominator, we can club the powers. We have negative sign with the n because n is coming from the denominator. Let's take 3 common from the power. Actually minus 3 so that we get 4m minus 1 in the bracket. And bingo, this value has been given to us. So all you need to do is substitute the value of 4m minus n, which is half. Therefore, the final answer of this question is under root 2 plus 1 by 27 ka under root. So question says half-life of element is time required for half of a given sample of radioactive element to change to the another element. The rate of change of concentration is calculated by this formula, where gamma is the half-life, A0 is the initial concentration, and AT is the concentration of radioactive element after time t. If radium has a half-life of 1500 years and the initial concentration in a sample was 100%, then calculate the percentage of radium in that sample after 4500 years. Okay, so now in this question we have been given that we have radium जिसकी initial concentration 100% थी and उसकी half life 1500 years है. और एक formula अपन को दिया हुआ है कि at any time t I can calculate the concentration by this formula, where A0 is the initial concentration, half raised to the power t upon gamma, where gamma is my half-life. Now I have to calculate the percentage, and the initial percentage is already being given. So I need not to convert it into the number. I can directly substitute it as a percentage, क्योंकि this is a number, right?
यहाँ पे परसेंटेज है तो मेरा आंसर भी एज अ परसेंटेज ही आने वाला है. सो नो नीड टू एक्सटेंड द आंसर. So according to the given question, the half-life is 1500. I have to calculate 80 at time 4500 and A naught percentage is given as 100 and I have to find 80 percentage. Cool. Now let's substitute the formulas. So 80 is equals to 100 half 4500 upon 1500. This will give me 3. So basically 80 is nothing but 100 divided by 8. This will give us 12.5. So this is the percentage which is left at time t is equals to 4500. Question number 5 says fx is this and gx is this. Then find the domain of a composite function gof. So composite function is a function which is made by the two functions. And the composite function जिसका अपन को डोमेन निकालना है that is GOF which can be written as G of fx. तो यार देखो अपन को gx दे रखा है, मुझे G of fx निकालना है. So basically जहाँ पे x था ना g के फंक्शन में वहां मुझे fx रिप्लेस कर देना है. So 1 minus x स्क्वायर था मेरा gx, बट यहाँ x की जगह मुझे क्या डाल देना है, fx डाल देना है. So it will be 1 minus x raised to the power half. Done. यहाँ से देखो powers get cancelled. What I will get 1 minus 1 plus x. Therefore, g of fx is nothing but x. So whenever I need to find the domain of a composite function, I need to check the domain of three functions. One is fx, one is gx, and one is a composite function that is g of fx. तो g of fx मेरा x है तो इसका जो डोमेन है that is r. मेरा जो gx है दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, इट बिलोंग्स टू आर. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट fx दैट इज 1 माइनस एक्स का अंडर रूट. एंड वी ऑलरेडी नो कि अंडर रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अलाउड है. नेगेटिव आ जाता है वो इमेजिनरी हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा. सो इट वोंट बी अ रियल नंबर. देयरफॉर जो अपना 1 माइनस एक्स है दैट शुड बी लेस देन, basically it has to be positive. Okay, for it what I have to do is that x has to be less than 1. Therefore what timeline I am getting for this is कि एक तो पूरा का पूरा रियल नंबर है और एक जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए. So basically the answer or the domain of the composite function g of f will be minus infinity to 1. So let's analyze the option. This gets rejected. This gets rejected क्योंकि मुझे 1 to minus infinity to 1 चाहिए. 1 to infinity is what I have to reject. Therefore this gets true क्योंकि R में से अगर मैं 1 comma infinity हटा देती हूँ what I will get minus infinity to 1 which is my domain. Now let's analyze option number B, what it is denoting to. तो it is denoting कि एक तो मैं -2 और 1 लिख देती हूँ. अब ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 1. सो माइनस इन्फिनिटी टू 1 और -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी का मेरे को इंटरसेक्शन लेना है. सो द एरिया विच इज इंक्लूडेड इज दिस वन. डन. अब इसका मुझे माइनस इन्फिनिटी -2, व्हाट इज माइनस इन्फिनिटी -2, दिस वन, इसके साथ यूनियन ले लेना है. मतलब कि अब ये जो कलर्ड एरिया है ना इसको तो लेना ही है. अब ये -2 से इन्फिनिटी वाला भी पूरा ले लेना है. तो यार ये जो पूरा कलर्ड एरिया होगा ना इसको जब आप देखोगे दैट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड दैट इज व्हाट our domain lies in. Therefore the correct options of question number 5 are B and D. So question 6 says find the domain of the inverse function. Now before doing this question let's first understand how to calculate the inverse function of any given function. So these are the steps which we have to follow. So step number 1 is write the fx as given. So for example, this is the function जिसका मुझे inverse निकालना है. तो fx की जगह यार y लिख दो, मतलब इसको आप normal calculative format पे लेके आ जाओ. Now what you have to do is you have to switch x and y. So basically y के जगह x लिख दो और x के जगह y लिख दो. सेकेंड स्टेप. तो पहला स्टेप है आपको जो इक्वेशन दी है वही की वही लिखो. सेकेंड स्टेप है स्विच करो x और y को. अब वापस से y की वैल्यू निकाल लो.
तो देखो ये आपने स्विच कर लिया, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है. सो यू गॉट अ वैल्यू ऑफ y. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y एज, तो ये जो आपने y कैलकुलेट किया ना, दिस इज नथिंग बट आर f इनवर्स x. ठीक है ना. तो यू हैव टू रिप्लेस दी y विथ f इनवर्स x एंड दैट वेरी इक्वेशन इज आर एक्सप्रेशन ऑफ f इनवर्स. So basic two step, write the equation, switch the positions, calculate for y and again change the y as f inverse x. So this is what we have to do in this question as well. So I have been given this equation. तो पहला step है मैं equation को as it is लिख रही हूँ. दूसरा step है मैं x और y को change करूंगी, तो y की जगह x लिखूंगी, x की जगह y लिखूंगी. तीसरा स्टेप है मुझे y के लिए सॉल्व करना है, सो इट विल बी दिस. तो मेरी y की वैल्यू आ गई. फोर्थ स्टेप है कि मुझे y को f इनवर्स x के साथ रिप्लेस करना है. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन आई गॉट एज अ इनवर्स फंक्शन. सो दिस इज माई इनवर्स फंक्शन एंड आई नीड टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ इट. तो यार इसका डोमेन तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्यूबिक है ना, दिस इज क्यूब रूट. सो क्यूब रूट के अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑल आर अलाउड है ना. नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ये बाहर निकाल देता है. सो द डोमेन ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन इज all the real numbers. So that's all in this question. Thank you so much for watching, and if you like the content then don't forget to subscribe to the channel.